I wanted to become an actor. I come from a village. I was one of the 6 children of my father, who was a farmer. It was a humble background. Okay, so my success was to become an actor. Now to become, now you will say to become an actor who's successful. No, my main struggle was to become somebody that I wanted to become. Okay, so when I started doing theater, I was successful in my mind. TWA Podcast, ladies and gentlemen. This is where we try and go behind the thoughts that animate the actions of those who create the arts. और सर बड़ा प्रिपेयर करके मैंने सोचा था कि ओपनिंग करूंगा कि हमें भी कुछ पाने की जिद थी और आप मिल गए सर. बहुत बहुत धन्यवाद ये कॉफी के लिए, आपने कॉफी पिलाई. ज्यादातर समय जो लोग इंटरव्यू लेते हैं कुछ खिलाते पिलाते नहीं है. सर लेकिन आपने जो हमें रस के घूंट पिलाए हैं सालों साल, मतलब ऑनेस्टली सर आई हैव बीन अ लॉन्ग टर्म फैन. मतलब वो शूल और द्रोहकाल के टाइम से जो है देखता आया हूं, लेकिन जो आपकी वो 7 मिनट की रश्मि रथी की सर, वो अगर किसी को, मतलब दैट शुड एक्चुअली बी अ केस स्टडी ऑन हाउ टू ट्रीट लिटरेचर. एंड लिटरेचर बुक्स आर probably something that I don't know if मतलब आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए होंगे. I'm not sure whether I should say that it's not talked about enough, your interest in it. But the written word is important, isn't it, sir? The written words are important. That is why the sound. Written words, whether you call it written words or the spoken word, the words are important. And that is why humankind has come up with those sounds to communicate with each other. Yes, the silences are very, very important. But if you don't have respect for the words which are invented by the humankind, by so many greats of ancient time, how are we going to do justice to any kind of art which depends solely on the words? Okay, well, so that is where the literature, becomes. It becomes so important. That is why it becomes so important for people to read and to write, because when you learn it, that is when you come to understand the importance of it. Yeah. So it all starts with. I always say that the poetry is the best exercise for anyone or who is willing to become an actor. If you're working on your speech and diction, poetry reading cannot be replaced by any other exercise. Wow. It's a must. And I have always been, it's very surprising for me, since the time I started doing theater, that none of the greats who have invented and modified exercises, and they have written about the ways of conducting, workshops on method acting. None of them have given emphasis on poetry reading. Absolutely. And my childhood, it was a blessing for me, because the school that I was studying in, I was in the boarding. The school and the towns, it was buzzing with elocution contest activity, and that used to be quite a big thing. It was like winning an Oscar if you win the first prize. So we had the culture of reading, stories, or reading speeches, reciting speeches of Jayaprakash Narayan, reciting speeches of Mr. Jawaharlal Nehru, जो उन्होंने फ्रीडम 15th अगस्त. Absolutely. जी, वो था. फिर आपको अंबेडकर साहब का, या फिर पोएट्री रीडिंग रश्मि रथी और बच्चन, सबको हमने इतना पढ़ा. इसलिए पढ़ा बिकॉज एक तो हम लोग की एक मेरा फैसिनेशन था परफॉर्मेंस को लेके, स्टेज पे जाने को लेके, तो उसके कारण वहाँ पे शुरू हुआ. अब दिनकर का अगर मैं आपको बोलूँ कि जब गुस्सा होते हैं कृष्ण, जब कृष्ण गुस्सा होते हैं, तो उसके पहले जो पूरी लाइन लिखी है कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है.
गर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है गर मुझे बांध कब सकता है। तो आप ये देखिए कि हर जो उस मीटर है, उस मीटर के साथ में जो वर्ड्स हैं, वो एक एक वर्ड्स जो हैं उसकी अपना सुर है, अपनी अपनी एक ताल है जिसके साथ उन्होंने लिखा है। इट्स अ ग्रेट वर्क। और खिलवाड़ जो किया है मतलब भाषा के साथ सर, पहले तो इंटीमेट नॉलेज एक तो भाषा की सर, एक और जो बात है अब कि एक होता है कहना और दूसरा होता है सुनना जी। एक बहुत ही अच्छा कोट किसी ने मुझे दिया था कि नाउअडेज वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर वेटिंग। आजकल हम इंतजार कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? एक मेरी बेटी के स्कूल ने उसको एक टॉपिक दिया था, जस्ट टू व्हाट दे डू दैट दे गिव अ टॉपिक just to see the imagination of the child, and that was, there were two exercises. It was so fascinating, and one was what will happen, how Harry Potter and Mr. Mahatma Gandhi will talk to each other. So that was amazing. Okay, then they have given a topic which is related to your question. Unmute, please unmute. So that's it directly related to what you just asked me. Listen, unmute. हम लोग इतने खोए हुए हैं अपने हैं, आत्ममुग्ध इतने हैं कि हम दूसरे को सुनते ही नहीं हैं। हम लोग इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं कि we think that we are the best gift to the humankind. हमने या फिर हमने एक दायरा बना लिया है, हम उसी में हैं, हम उससे आगे की ज़िंदगी को, लोगों को, रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा हूँ। जब मैं आपको सुन ही नहीं रहा हूँ तो एक्चुअली में दो आइलैंड पे खड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, ये ऐसा हो गया है। और भाषा ही तो जोड़ती है। और भाषा जोड़ती। बिल्कुल सर, ये जो है दूसरी चीज़ जो है, जो चीज़ हम शायद नहीं सिखा रहे हैं लोगों को, वो है डीलिंग विद फेलियर। मेरे ख्याल से फेलियर एक अपशब्द सा बन के रह गया है। You have dealt with failure so spectacularly to have emerged the person you are. How important is failure, sir? For me, I never believed in this word failure. Why? Because there is no philosophy to it. Ji. I wanted to become an actor. I come from a village. I was one of the 6 children of my father, who was a farmer. Ji. It was a humble background. Okay, so my success was to become an actor. Now you will say to become an actor who's successful. No. My main struggle was to become somebody that I wanted to become. For sure. Okay, so when I started doing theater, I was successful in my mind. Because we could not even think of becoming an actor or doing things which was completely unconventional for our society. So becoming an actor and making a little bit of money, 5 rupees, even 100 rupees or 200 rupees with Sanjoy that I was working with, I was a successful guy. Sure. In my mind, I was never a failure. So it always depends how you look at success and failure. When I'm following my passion, I'm successful. Now, अगर आपके दिमाग में मर्सिडीज गाड़ी रखी हुई है और अगर आपके दिमाग में 5 लाख लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, वो सक्सेस है, then I disagree with it. Sure. So the success और failure का पैमाना क्या है आपका, definition क्या है? So I have always been very successful, believe me. When my film didn't run, I was successful. When I was making Bhosle and we were not getting financiers who believed in that project, our resolve kept on becoming stronger and stronger. So our goal was to get the film made. Okay. So when the film got made, it won all international awards. It got me my 3rd national award. It got me, APSA in Brisbane. Yeah. Okay, so that was just a cherry on the cake. But the success was that we got the film made, but we didn't find the distributors who could release the film in theater. So should I say that we were failure? So it's always how we look at it. I always tell my workshop participants, keep no on your pocket. यहाँ पे नो रख के चलो, एक इसमें नो रख लो, है ना? बिल्कुल। ऑडिशन जब देने जाओ तो सिर्फ नो रखो। जी। सिर्फ नो। जी। क्योंकि कोई नहीं जानने वाला है आपको। बिल्कुल। हाँ,
ये मान के रखिए कि आप जो कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं। इट्स अ प्रैक्टिस। आजकल के दौर में चूँकि आप इतना ज़्यादा यूट्यूब है, फेसबुक है, रील बना रहे हैं लोग, इतने सारे फॉलोअर हो गए, ये मेरे कितने लाइक हो गए, इतना ही। So that is what it is doing. What it is doing, that it is taking away the focus from learning. Absolutely. बिल्कुल. We don't have patience to learn. When we were working in theatre, we didn't have these distractions. So all we could do was learn. बहुत टाइम था हमारे पास। और सर ये मेरे ख्याल से एक और जो बात है कि इन दिस एज ऑफ 280 कैरेक्टर्स 30 सेकंड रील्स, इंस्टेंट सक्सेस जो है वो प्रोडक्ट हैज बिकम प्राइमोर्डियल, मतलब वो इंपॉर्टेंस हो गई है, प्रोसेस किसी को पता नहीं है कितना कि 8 रील पहले मिस हुई और उसके बाद नवी रील अच्छी हुई। पीपल डोंट आर प्रोबेबली नॉट understanding the process, and process has always been important for you because you've always put stories first, haven't you? You always put stories first. When we are given a character, you will not believe that we read the scripts more than 50 times. जी. And we keep exploring the characters till the time shooting is wrapped up. जी. And then अचानक से जब फिल्म देखते हो तो लगता है कि सब अरे यार इसको तो ऐसे कर सकता था. So you are not trying to grow. If you're not trying to grow, if you're not trying to learn from the work that you are doing and from the work that you've done, then I think सारा जो पर्पस है ना जी हमारे क्राफ्ट का वो लॉस्ट हो जाता है। क्रिएशन ऑफ क्राफ्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम इसको सक्सेस और फेलियर से जोड़ करके इसको बहुत छोटा कर देते हैं। So the other thing with stories, of course, is, and I ask this because I've been fascinated by your choice of roles, which is absolutely brilliant, because it shows that not just the story, but the character's story and the story within the story is important for you. आजकल stories को they are becoming more subservient to an agenda. मतलब एक story को भी एक agenda, एक वो दे दिया जाता है। सर ऐसा है, कभी हुआ है कि आपको एक कैरेक्टर का लालच हो बट स्टोरी आपके कॉन्शियस के साथ मैच ना कर रही हो? बहुत बार होता है। Is there choices? बहुत बार होती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो बढ़िया है जी, बढ़िया है, बट वो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है जी। या वो एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है या एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो आदमी फिल्म नहीं बनाना चाह रहा है, उसका मकसद कुछ और है। तो हम उसकी नीयत पे जाते हैं, हमको लगता है यार इस फिल्म का कुछ होगा नहीं, है ना, क्योंकि इनकी बनाने की नीयत सही नहीं है। ही इज नॉट डाइंग टू मेक इट, ही इज नॉट डाइंग टू पुट इट आउट देयर टू द ऑडियंस, ओके। He is not dying. He is not desperate enough. Rather, you can tell that. You can tell that. I mean, you have a meeting, one meeting. अब तो खैर हम थोड़ी उम्र भी हो रही है तो एक ही मीटिंग में बता देते हैं। जी बिल्कुल। पहले 3-4 मीटिंग लगती थी। Of course. तो सर ये art of course is art in itself, but also I believe that art has a responsibility as well to fulfill towards society. What are your views on that? Do you think art is being allowed to fulfill its responsibility to discomfort? एक तो आर्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए। I don't believe it. You don't. Art itself is a way to free yourself. Right. आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल करके फिर से उसके पैर में आप जंजीर डाल रहे हो। Art is freedom. Art is imagination. Art is wild fly. Okay, let me fly. Okay, and उसको अगर आपने जो है जिम्मेदारी से जोड़ दिया तो फिर वो आर्ट नहीं रह जाता है, एजेंडा हो जाता है। Lovely. Okay. आर्ट, हर ह्यूमन स्टोरी में कुछ ना कुछ है सीखने के लिए, लेकिन जब सिखाने की नीयत से करूँगा फिर वो आर्ट नहीं रह जाएगा। और दूसरा जो मेरा कहना है कि हर अच्छी कहानी या अच्छी फिल्म या अच्छा नाटक वो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा सोसाइटी में, वो हमेशा करेगा, लेकिन कंट्रीब्यूट करने का प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। राइट, श्योर। कंट्रीब्यूट करने का प्रेशर देंगे फिर वो आर्ट नहीं रह जाएगा, देन उसमें वो फ्रीडम नहीं रहेगी, फिर वो उसमें इमेजिनेशन नहीं रहेगी। So that is why I always try to stay away from any kind of a social responsibility when I'm doing a role. It will happen automatically if I am given the freedom to go ahead and just be part of it freely, okay, and use all my experience and imagination to it. Right, of course. A good art can be part of a great discussion, social discussion, but an art cannot change a society.
So you're saying that responsibility is also in a way restrictive to the creation of art? Quite restrictive. You don't do that. You are doing complete. You are not doing favor to the art. Right. You know, when a sculpture is actually giving a shape to an installation. जी. अगर आप उनको बोलो कि ये ऐसा लगना चाहिए कि गांधी जी हैं, तो उसकी अपनी इमेजिनेशन को तोड़ दिया आपने. That's a fair point, actually. आपने उसके रिस्ट्रिक्ट कर दिया बिल्कुल. कि जो वो बनाएगा उसमें गांधी जी का डंडा दिखना चाहिए या गांधी जी दिखने चाहिए. नहीं भाई, वो बना रहा है बनाने दो, वो जो बना रहा है बनाने दो. आपको किसी फंक्शन के लिए गांधी जी का इंस्टॉलेशन बनवाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. श्योर. लेकिन जब एक बंदा अपने गार्डन में बैठ करके इन्वॉल्व है, एक स्कल्पचर बना रहा है, उस समय उसके दिमाग में जो है जाकर के आप अननेसेसरी चीजें, जिम्मेदारी मत दीजिए उसको. let him fly. That's actually, let him explore. Sure. And that's why perspectives are important, isn't it? मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि responsibility बहुत जरूरी है, but this is a brilliant perspective actually. And finally, जो process है, I mean, we know that you research your roles in depth. लेकिन क्रिएटिविटी इन अ वे इज केओटिक, नहीं मतलब यू कैन. तो आप जो है ये एकेडमिक रिगर जो है ऑफ लर्निंग और क्रिएटिव केओस है, क्या इसको मिक्स करते हैं? व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर actors and all the creative people? People who are really interested in their art, in the growth of their craft or evolution as an artist and human being, their eyes and minds are quite open. That is why they are such fascinating minds. They read, they watch, they practice, and they observe. तो ये सारी चीज़ों का amalgamation होता है. अगर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढूं, अगर मैं किताब कभी नहीं पढूं, और तो मेरा इंटरप्रिटेशन आएगा ही नहीं. इंटरप्रिटेशन के लिए, एक अच्छे इंटरप्रिटेशन के लिए, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग. और वो जब प्रोसेस जो होता है वो क्रिएटिव भी होता है, एकेडमिक भी होता है. जी. पहले एकेडमिक होता है एंड देन एकेडमिक पीछे रहता है, फिर वो क्रिएटिव हो जाता है वो. एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड. नहीं, आपने कह रखा है कि जब आप कैरेक्टर में डूब जाते हो, उससे निकलना इज आल्सो अ प्रोसेस. इट्स आल्सो अ प्रोसेस दैट यू लर्न ओनली विद टाइम. जी. इनिशियली तो यू रियली डोंट नो how to help yourself. And it's dangerous as well, isn't it? It's dangerous. It's you know, sometimes it is about your mental health. It is actually, it affects your you know, whole mental space. तो उससे निकलने के लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब आसान है. Because with experience you learn the trick of distracting yourself, you know, inwardly and outwardly. So वो समय के साथ आ जाता है. और सर फाइनली जो यंग बच्चे हैं जो एक्टिंग में आते हैं, दे आर seduced by glamour obviously, and that's one side of the coin. The other side of course is the grime, जो ज्यादा दिखता नहीं है क्योंकि वो ऊपर नहीं होता है. तो what would your advice be to those who are, you know, the same thing we were talking in the beginning, how you look at your passion. Is it a passion to buy a Mercedes? Or is it a passion that you will die with, you know, if you don't do it? You know, I would have died. I would have definitely died had I not become an actor, had I not been given the freedom or the space to create or to do what I always wanted to do. अगर आपके सपने आपको, इसकी बहुत अच्छी कहावत है मेरे ख्याल से, अगर आपके सपने आपको सोने नहीं देते तो फिर वो सही सपने हैं. क्या बात है, क्या बात है. हमारा सपना था आपसे ये सवाल पूछने का सर. ये सपने कभी पूरे हो जाते हैं सर. and we've been dying to ask you more questions. We are also dying to ask you even more questions, but we can't monopolize your time. I know you're a very, very busy person, and I know that asking you questions would probably mean keeping you away from your shooting schedules, which is not a good idea. We'd love to see you on screen. More power to you. Thank you. More power to your courage of conviction. Thank you very much for your time. Thank you. Thanks a lot. Manoj Bajpayee on the TWA Podcast, ladies and gentlemen. Remember to subscribe to us on our social media handles because, you know, validation is extremely important to us, and think it's important. If you're not dying to do it, why do it? सवाल बहुत हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएंगे. थोड़े से मनोज जी ने दे दिए, थोड़े आप खुद ढूंढ लीजिएगा. Thank you very much for listening. TWA Podcast, what you were listening to. If you've enjoyed this podcast,
subscribe to our channel now. We have a new episode out every Friday.